So we'll start the test discussion. So first question was recently news Mayflower 400 refers to which of the following? Current affair का है and related to science and tech topic. Okay, artificial nuclear ship, nuclear power plant, fossil free steel, or blockchain technology. So Mayflower 400 was in news very recently. It is a artificial intelligence ship. It is the world's first artificial intelligence ship, 15 मीटर long and navigates with complete autonomy. ठीक है, complete autonomy से navigate करता है. After its launch, it will be the first unmanned vehicle to cross the Atlantic Ocean. So ऐसे direct questions आते हैं, so that they'll put these options in a very similar pattern, nuclear, blockchain. बहुत ही तो न्यूज में होता है. The wrong options will always be news. ये भी न्यूज में होता है. Only just to make you confused. ठीक है. So you have to very carefully know कि what exactly is in news. खास करके जब साइंस एंड टेक की बात आती है तो इसमें करंट अफेयर का साइंस एंड टेक एनवायरमेंट इसमें करंट अफेयर का काफी वेटेज रहता है. ओके, ठीक है. नेक्स्ट, consider the following statements. Bitcoin is an unregulated digital currency and uses blockchain technology as its transaction ledger. तो बिटकॉइन भी न्यूज में है, ब्लॉकचेन भी न्यूज में है. Public blockchains must be secured with cryptography and a consensus system like proof of work. The point is, the topic is again science and tech, and again science and tech में Bitcoin last year also question came, blockchain technology question आता है, Bitcoin से question आता है. So here the answer is both are correct. Why? So you should know here the difference between blockchain and Bitcoin. The difference between blockchain and Bitcoin. So Bitcoin is an unregulated digital currency. Bitcoin uses this technology as its transaction ledger. So blockchain technology होता है क्या? ये टेक्नोलॉजी ऐसा है जहां पे the transaction record हो जाता है. Okay, record हो जाता है. You will not be able to change it. हर ट्रांजेक्शन एक लेजर में एक ब्लॉक वाइज रिकॉर्ड हो जाता है. इट कैन बी यूज्ड इन एनी सेक्टर. इट कैन बी यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल सेक्टर, इट कैन बी यूज्ड इन बैंकिंग, इट कैन बी यूज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर. सब कुछ पता चल जाता है. बिटकॉइन merely uses this technology as a means to transparently record a ledger of payments, but blockchain can in theory be used to immutably record any number of data points. तो बेसिकली ये टेक्नोलॉजी है, बिटकॉइन इसको यूज करता है. Now, the difference between private blockchain and public blockchain. Okay, see, public blockchain, also known as open or permissionless blockchain, is one where anybody can join the network freely and establish a node. Because of their open nature, because ये public है, these blockchains must be secure. तो क्योंकि public है, open nature है, तो उसका security बहुत जरूरी है. It must be secured with a cryptography and a consensus system like a proof of work. Private में it is already secured. It is a permissioned blockchain. On the other hand, requires each node to be approved before joining. Because nodes are considered to be trusted, the layers of security do not need to be as robust as the public blockchain. Okay. So ऐसे type of questions भी आते हैं UPSC में. Next. Consider the following about National Mission for Interdisciplinary Cyber Physical Systems. ये भी न्यूज में है. सो ये साइंस एंड टेक में हो सकता है या फिर स्कीम्स में आ सकता है या फिर कोई एक मिशन है. क्योंकि ये साइबर रिलेटेड है तो विल टेक इट फ्रॉम द साइंस एंड टेक टॉपिक. ओके, ठीक है. क्वेश्चन क्या है? इट इज एम्ड एट complete convergence with all stakeholders by establishing strong linkages between academia, industry, government and international organizations. Yes, correct है. अब इस मिशन को बेसिकली साइबर फिजिकल सिस्टम्स के बारे में ये मिशन है. ओके, तो उसको इंप्लीमेंट कौन करता है? एक एजेंसी है जिसका नाम है SERB. इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक.
SERB, Science and Engineering Research Board. इट इज अ फंडिंग एजेंसी ऑफ दिस मिशन, यही फंड करता है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंडर में आता है दिस ओवरऑल मिशन। Academic and R&D institutions are the target audience of this mission. Yes, ये मिशन किसके लिए है? बेसिकली जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एंड R&D इंस्टीट्यूशंस के लिए है। अब मिशन के बारे में यहां से देखते हैं। सी, this mission aims to create a strong foundation and seamless ecosystem for the cyber physical system technology nationwide, ताकि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो, नॉलेज जनरेशन हो, डेवलपमेंट, इनोवेशन, कमर्शियलाइजेशन, हर चीज। ठीक है, तो ये एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट टाइप है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक में आता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, फोकस्ड एरिया साइबरनेटिक्स, मैकेट्रॉनिक्स, डिजाइन एंड एम्बेडेड सिस्टम्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसको फंड कौन करता है? SCRB करता है। एंड एकेडमिक एंड R&D इंस्टीट्यूशंस आर द टारगेट ऑडियंस। एलिजिबिलिटी कौन है? एकेडमिक एंड R&D इंस्टीट्यूशंस which are within top 50 overall NIRF, National Institutions Ranking Framework, NIRF। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो करती है, दिस रैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को रैंक करती है। विद इन टॉप 50 में जो है उन्हीं के लिए है। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट बुडापेस्ट कन्वेंशन। देखो नाउ बुडापेस्ट कन्वेंशन ये IR का है। Convention questions will 100% come in prelims and it will be very difficult also. So you need to know a lot of conventions. देखो environment में बहुत सारे conventions है, we need to cover that. Overall general conventions related to it can be anything. It can be convention related to nuclear हो सकता है, या फिर एक space treaty हो सकता है, cyber हो सकता है। Now Budapest में convention हुआ था. It is the Budapest Convention on cyber crime. It is the only international multilateral pact against cyber crime legally enforceable. Yes. Now the thing is, it is a very extreme sentence because of only. Usually UPSC play करता है ऐसे words डाल के, जैसे आपको लगेगा कि it is a wrong statement because ये very extreme sentence, ये कैसे हो सकता है? कुछ ना कुछ और convention भी होना चाहिए ऐसे। We think that way, but it is the right statement. अब पॉइंट क्या है? टिप्स एंड ट्रिक्स में जो होता है, अगर आप ये सोचोगे, इफ यू थिंक इट इज अ वेरी एक्सट्रीम सेंटेंस, क्योंकि द वर्ड हियर इज ओनली, तो आप पहले क्या करोगे? इसको कैंसिल कर दोगे, इसको कैंसिल कर दोगे। नाउ यू विल थिंक either 2 is correct or 3 is correct. You will, because you have already solved half. You think you have solved half of the answer, so you'll always go for it. Okay, you will always go for it. You will attempt it. But the point is, you are now attempting or trying to attempt or utilizing or wasting your time on 2 wrong options. And first is you are wasting your time. Second is you are also getting a negative mark. That is the reason why I always tell you have to be very perfect. You read anything, any content, any topic, you have to cover each and everything. Nowadays state exams are also UPSC level. Those I have given yesterday, they know it. तेलंगाना PCS का कल एग्जाम था। I told from the beginning, फर्स्ट डे से मैं से बता रहा हूँ कि ये स्टेट लेवल UPSC के लेवल में डिवीजन मत करो, वैसा कुछ नहीं है। ऑलवेज ट्राई फॉर द हाईएस्ट लेवल, ऑलवेज ट्राई फॉर द हाईएस्ट लेवल स्टडी। ऑब्वियसली स्टेट एग्जाम्स का 10-20% अलग रहता है, बट स्टिल देन मोस्टली इट इज द सेम। इफ यू टॉक अबाउट द साइंस एंड टेक, द करंट अफेयर्स, ऐसा नहीं कि कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। Those days are gone when direct questions used to come in state exams. Those days are gone. So here the answer is all the above, because this convention is the only international material treaty against cybercrime legally enforceable. India इसका member नहीं है, पहले से India इसका member नहीं है, and any country may make use of the Budapest Convention as a guideline, checklist or model law. Any country, कोई भी country है, if you join also, if you don't join also, you can take the guidelines or you can take the best practices of this convention. It's up to you, because it talks about cybercrime, and cybercrime is a very big thing nowadays. It's happening everywhere. Okay. So the explanation, यहाँ पे मैंने बुडापेस्ट कन्वेंशन पूरा कवर कर दिया है। It is also known as काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम। वर्ल्ड का पहला इंटरनेशनल ट्रीटी है टू कॉम्बैट साइबर क्राइम।
और इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ओके, इट वाज इंट्रोड्यूस इन 2001, 2004 में इफेक्ट पे आया। इट वाज ड्रॉन इन फ्रांस में एक जगह है स्ट्रासबर्ग बाय द काउंसिल ऑफ यूरोप and 64 nations signed. No need to remember this. 64 जरूरत नहीं है, बस you need to remember India is not a part and it is related to cyber crime. Okay. Next, the Budapest Convention is the only international treaty. All those things I have mentioned. Legal enforceable, unlawful access, data interference, illegal interception, misuse of equipment, network system interference, cyber fraud, illicit cyber forgery, child porn offences, violations of adjoining border rights, copyright, ये सब address करता है this convention. All these things are addressed by the convention. Since its inception, India has maintained its non-member stance in this convention, which यूरोप लीड से यूरोप लीड करता है, यूरोप की कंट्रीज लीड करते हैं इस कन्वेंशन को। बेनिफिट्स क्या है? It is more than a legal document. It is a framework that permits hundreds of practitioners from parties मतलब countries which are member to this convention, to share their experience, create relationships that facilitate cooperation in specific cases, including in emergency situations beyond the specific provisions foreseen in this convention. Any country may make use of the convention as a guideline, as a checklist, or a model law. Furthermore, if you become a party, then you'll have additional advantages. Obviously, when you become a member. But the thing is, without becoming a member, also any convention, nobody stops you. Na? Any convention in the world, if India is not a member, that does not mean India can't follow or can't take the practice or the best practice of that convention or any guideline or anything. They can use it, right? But yes, once you become a member, you will have those extra or the added advantages. Okay, next. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपके एग्जाम पे आएंगे जो कि वेरी ओरिजिनल, आज तक रिपीट नहीं हुआ है, कहीं पे नहीं है, कोई भी टेस्ट सीरीज से आपको मिलेगा भी नहीं. एंड दीज आर इन न्यूज. फॉर एग्जांपल, व्हाई आई टेल यू इट इज इन न्यूज. रिसेंटली न्यूज द ऑक्टोपस कॉन्फ्रेंसेस आर एसोसिएटेड. सी, साइबर क्राइम न्यूज में है, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट न्यूज में है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द मतलब एनवायरमेंट का मेन चीज है, हमेशा न्यूज में रहता है, बेसल नॉर्म्स इकोनॉमी का है. Now you see all these four options are very relatable or nothing. Now how to solve? Very relatable, and you have seen these words in your preparation. The point is you have seen these words. Now here the UPSC plays this particular thing. They will play with your minds. They will put those options which you have gone through or have read somewhere. They will always make you feel very comfortable with the options. Because if there will be very different kinds of words in the option, so obviously you will not attempt because you will not feel relatable. So they will play with your minds. See, this thing can be so. Octopus conference related to what? So Octopus conference is related to cyber crime. साइबर क्राइम से रिलेटेड है और साइबर क्राइम न्यूज में भी हमने करंट अफेयर में पढ़ा भी है साइबर क्राइम. द पॉइंट इज व्हाट आई टेल, व्हेन यू डू करंट अफेयर इन माय मेंटरशिप थिंग, डू नॉट गेट योरसेल्फ स्टिक टू द मैगजीन व्हिच आई टेल. डू नॉट, यू हैव टू मूव अहेड. यू हैव टू मूव अहेड. जो मेरे पास यहाँ पे पढ़ने आते हैं यहाँ पे हैदराबाद में मॉर्निंग में, दे नो, माय ओल्ड स्टूडेंट्स नो, बट दोज आर न्यू, सिर्फ ऑनलाइन में कर रहे हो. सो व्हाट आई सजेस्ट, यू हैव टू learn the art of finding interesting facts, or you can say relevant, from internet. Now how to do, you can't, this will always be happen, only a mentor can do it. Teacher is not, teacher will always teach you, mentor will tell you the path how to do वो चीज. अब ये चीज एक मेंटर ही कर सकता है, कोई और कर ही नहीं सकता, बिकॉज दीज आर नॉट देयर इन एनी बुक्स. यू हैव टू फाइंड इट आउट. एंड हाउ टू फाइंड आउट, दैट आर्ट नीड्स टू बी डेवलप्ड इन योर प्रिपरेशन. द पॉइंट इज व्हेन आई मेक दिस क्वेश्चन, मुझे पता नहीं था ऑक्टोपस कॉन्फ्रेंस के बारे में. मुझे ये पता था कि आई पुट साइबर क्राइम इज अ टॉपिक इन दिस वीक टॉपिक.
So I have to put something which will be relevant and which is in current affair, and it will be difficult, but in a easy format, direct format. Four things are satisfied here. Okay, अब देखो, ऑक्टोपस कॉन्फ्रेंस वही बुडापेस्ट कन्वेंशन काउंसिल ऑफ यूरोप के अंदर में आता है. ऑक्टोपस कॉन्फ्रेंस हेल्ड every 12 to 18 months by the Council of Europe constitutes one of the biggest and finest platforms of exchange. यहाँ पे conference में they exchange the knowledge about cybercrime. Experts from 80 countries, private sector, international organization, academia, they come. Each October conference has a specific focus linked to the latest cybercrime issue. 2021 में हुआ था. हर 12 से 18 महीने 12 to 18 months में होता है. It's not like मतलब एवरी ईयर होता है. 12 to 18 months में होता है. रिसेंटली हुआ भी था. 2021 न्यूज में है. ओके, सो ऑक्टोपस कॉन्फ्रेंस इज रिलेटेड टू साइबर क्राइम. ओके, so it is held every 12 to 18 years. Council of Europe. These all we have discussed now. Okay, fine. Next, recently news polytrack technology is used in which of the following? अब देखो, this is also technology, science and tech. Polytrack, waste to energy, to get rid of oil spill, 3G biofuel, spacecraft launch vehicle. So again, all these four options are relatable. Waste to energy plants न्यूज में है, ऑयल स्पिल न्यूज में है, जो शिप से पानी में जो वो ऑयल निकलता है, इट इज नॉट इट क्रिएट्स एक्वाटिक पॉल्यूशन. ठीक है, ऑयल स्पिल. 3G बायोफ्यूल न्यूज में है, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी में है, स्पेसक्राफ्ट लॉन्च व्हीकल तो हमेशा न्यूज में रहता है. So now the thing is, I will suggest you these kind of questions where all the four options are very relatable and you do not know, then you have to leave that question. You have to leave that question because all four options are very relatable, so you can't use your you can't use anything. This is a very direct question. स्टेटमेंट फॉर्मेट में जब क्वेश्चन नहीं है, सो द चांसेस कम बन जाता है. हाउ टू अप्रोच, यहाँ से आपको कैसे पता चलेगा? वेदर यू नो, whether you don't know, you don't know. So you have to leave that kind of question in order to avoid that negative marks. Okay. Now don't try to do your permutation combination from these words. Poly क्या है, क्रैक क्या है, उस हिसाब से मैं क्रैक होता है तो हाँ ऑयल स्पिल हो सकता है, वहां पे भी क्रैक से पानी निकलता है, वैसा कुछ नहीं होता है. You should avoid all these things your own trying to get something from the words. No, वो गलती मत करना, नेगेटिव मार्किंग लेके आओगे. Okay. So recently this technology was used in Odisha by Indian Railways Commission. Answer is waste to energy plant है. These all are wrong. Waste to energy plants. So waste to energy क्या है? It's a technologically advanced means of waste disposal that is widely recognized for reducing greenhouse gases. Waste to energy को convert होगा. Particularly methane by eliminating the emissions from landfills. Landfill में जो हम कूड़ा, जैसे हम हिंदी में बोलते कूड़ा बोलते, कूड़ेदान में, या फिर हम जब लैंडफिल करते हैं वहां से मीथेन गैस आता है, और दैट इज अ वेरी important greenhouse gas, like not important, but it's a greenhouse gas. So waste to energy or energy from waste is the process of generating energy in the form of electricity and heat from the primary treatment of non-recyclable waste. उसको हमको primary treatment करना पड़ेगा. This technology is used and the processing of non-recyclable waste into a fuel source. So polytrack technology is related to waste to energy plant. So obviously there will be some other technologies also. क्योंकि खत्म नहीं होता है. That explanation will help you. So कभी भी आपको एक टॉपिक मिल जाता है, so you if you know one technology, go for 3 to 4 more technologies. See, all these things will not find in book. Again, internet. और ये चीज आपको एक मेंटर बोलेगा कि अच्छा ये हो गया, आप और 3 कीजिए, या 4 कीजिए, 5 कीजिए. तो this styling of study you have to put it in your self study as soon as possible. Okay, fine. So एक हो गया polytrack technology. So it's the world's first patented heterogeneous catalytic process that converts multiple feedstocks into hydrocarbon liquid fuels, gas, carbon, water,
द प्रोसेस एक क्लोज लूप सिस्टम में होता है ना, टेक्नोलॉजी के अंदर जाके उसको डिटेलिंग करना वो जरूरी नहीं है. Those kind of questions will not come because it is not a science and tech exam. They simply want to know whether you know or not this technology is used or basic thing क्या convert करता है क्या आता है. That's it, enough. The process is a closed loop system and does not emit any hazardous pollutants into the atmosphere. The combustible non-condensed gases are reused for providing energy to the entire system, and thus the only emission comes from the combustion of gaseous fuels. Is the combustion of gaseous fuels आता है. This process will produce energy in the form of light diesel oil which is used to light furnaces. एक एप्लीकेशन हो गया. तो इस टेक्नोलॉजी का एक एप्लीकेशन ये हो गया. They can ask what are the applications of polytrack technology. 3 से 4 वो भी ऑप्शन डाल सकते हैं वहां पे. It has the following advantages over the conventional approach of treating solid waste. यहाँ पे प्री सेग्रीगेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड. ये सब 24 आवर्स में प्रोसेसिंग हो जाता है. हाई टॉलरेंस टू मॉइस्चर, hence drying of waste is not required. It is an enclosed unit, hence the working environment is dust free. क्योंकि ये closed environment में होता है तो dust free हो गया. Less area भी required है for installing the plant. अगर क्वेश्चन मेंस में भी आ गया GS3 में पॉलीट्रैक टेक्नोलॉजी के बारे में, polycrack technology के बारे में, you can write all these things. All constituents are converted into valuable energy, thereby making it zero discharge process. The gas generated in the process is reused to provide energy to the system, thereby making it self-reliant and also bringing down the operation cost भी कम कर देता है. Okay. A safe and efficient system with built-in safety features enables even an unskilled user to operate machine. तो एक unskilled आदमी भी इस चीज को ऑपरेट कर सकता है. कैपिटल कॉस्ट लो है, ऑपरेटिंग कॉस्ट लो है. A fully automated system requires minimum manpower. Okay. Now coming to some other technologies. Okay, related to this. Gasification, pyrolysis, ये सब न्यूज में है, ये भी न्यूज में है. तो when you cover here, search some more about pyrolysis. ये भी आपको कुछ कंटेंट इंटरनेट से you can take and write it down. गैसिफिकेशन में उतना जरूरी नहीं है, इंसिनरेशन भी उतना जरूरी नहीं है, एनारोबिक डाइजेशन भी जरूरी नहीं है. जस्ट गो थ्रू इट, यू हैव टू सिंपली गो थ्रू इट. ओके, ठीक है. टॉरेफैक्शन एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी इट इज रेलिवेंट, यूपीएससी रेलिवेंट. यहाँ पे हम हीट करते हैं स्ट्रॉ को, ग्रास को, या फिर सॉमिल रेसिड्यू जो आता है और वुड बायोमास को, तो 250 डिग्री सेल्सियस टू 350 डिग्री सेल्सियस हीट करते हैं. हीट, वो हीट की जगह कूल कर देगा, गलत हो जाएगा. This changes the elements of the biomass into coal-like pellets, coal, COAL. These pellets now can be used for combustion along with coal for industrial application. Steel में, cement production में काम आ जाता है. Torrefaction technology. Okay, so torrefaction is important. Fine. Next, recently in news, E-Amrit क्या है? Electric vehicles, medicinal plants, MSPs, minimum support price for minor forest produce or none. See, E-Amrit again current affair, but it is related to electric vehicles. So electric vehicles is in news. एक FAME scheme भी है. There is a FAME scheme electric vehicles के लिए under Ministry of anyone? Heavy Industries. So FAME scheme is very important. So FAME scheme everyone knows is very common scheme. But recently E-Amrit भी हुआ था, वो क्या है? It is related to electric vehicles. अब क्या रिलेटेड है ये अब देखेंगे अभी. Now see how current affairs is, you have to read. See हम ना why it is important also you will come to know. ये एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक पोर्टल है, ठीक है, ई व्हीकल्स के लिए पोर्टल. दैट इज वन थिंग, वन काइंड ऑफ क्वेश्चन. अगर डिटेलिंग आएगा, इफ सेपरेट क्वेश्चन ऑफ फॉर्मेट, सेंटेंस फॉर्मेट में क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो क्या करोगे. ये लॉन्च हुआ था COP26 UNFCCC का रिसेंट करंट अफेयर, एनवायरमेंट टॉपिक आ गया ये. नाउ सी इफ दीज थिंग कम इट विल बी एन एनवायरमेंट टॉपिक. ठीक है, ग्लासगो में हुआ था UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज का कन्वेंशन है.
Launch of e-Amrit portal was attended by Niti Aayog advisor Sudhendra Jyoti Sinha. No need to remember the names. And UK high level climate action champion Nigel Topping. अब e-Amrit है क्या? Accelerated e-mobility revolution for India's transportation. Now this month जो मैंने दिस वीक शेड्यूल में एक टॉपिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स था, ठीक है, जो मैगजीन पे पढ़ते हो, बट अगेन दैट इज नॉट enough. That is, you get some topics, then you have to make your own notes from internet. If you do it, then only you can solve this kind of questions. This web portal was developed by Niti Aayog in association with UK government. So Niti Aayog and UK, you have to remember, as a part of India UK joint roadmap 2030. तो इंडिया एंड यूके का है, ठीक है. लॉन्च एम क्या है? क्रिएटिंग अवेयरनेस करेगा रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इन इंडिया. इट हैज बीन डेवलप्ड एज ए वन स्टॉप साइट containing all information about the adoption of electric vehicles. Okay. Okay, all these things are normal things. They have written like a portal mein or electric vehicles related. All this information will be available. Okay. Next question. Now, AlphaFold is in news. AlphaFold is in news. Now, AlphaFold is an AI system that predicts a protein's 3D structure from its amino acid sequence. Now, this is a very direct statement. Current affair mein hai. So, this week current affairs, we know this statement. We know because it is mentioned in the magazine. Now, what about second statement? AlphaFold has been used to predict structures of proteins of COVID-19. Now, the thing is, this is news. Okay. This is our relatability factor because of COVID. Now, when you go to this topic to your magazines, first statement you have, second statement you don't have. So you'll go with one, but it is wrong. Both are correct. So AlphaFold का थोड़ा detailing you have to do it from internet. First is Wikipedia थोड़ा देखो. You have to see, you have to read. Once you read, you will find that thing. You will find that thing. See, it is a very new thing. I also came to know. Very recent. So the thing is, while making questions, I have to see the relatability factor. When I was reading some 5 to 6 articles, when I read in Wikipedia also I found, and that was very down में वो लिखा था एक applications of AlphaFold यूज हुआ था कोविड-19. कोविड-19 को कोई भूल भी नहीं सकता, ठीक है. So both are correct. Here is the explanation. Okay. So you can go through the explanation. Fine. So protein related hai. All these information are very normal thing. You can just remember. But see, the thing is, they will ask science and tech questions not in a very detailed manner. The question may look very difficult. It may look like कहाँ से पूछ लिया ये क्वेश्चन, but it will not be in a detailed manner. जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी अगर काफी डिटेल्ड मैनर में पूछते हैं, it will be more of an IQ level whether you know or not. Those level का है, ठीक है. Because applications में COVID-19 है, ये यूज हुआ, it was used to predict the structures of proteins of the COVID-19. तो इसीलिए that thing becomes important. Okay, fine. Next question, very important. Consider the following about cartel and monopoly. Now it becomes an economic question. Economic current affair में भी है. It is also a part of economic static. See, the point is I call it static. You will say, sir, the word cartel and monopoly is not there in any chapters. That is again you are making a mistake. Cartel, monopoly, thing is you will find somewhere the word monopoly. Somewhere you will find cartel. Cartel is also a part of IR. When you read OPEC, OPEC is a cartel. Organization of Petroleum Exporting Countries. Okay, headquarters is in Vienna, Austria. Okay, so cartel is formed by a group of individuals, organizations, producers, suppliers of a particular product
एंड इज सेटअप टू कंट्रोल प्रोडक्शन सेल्स प्राइसिंग। ओपेक वही तो करता है, क्रूड ऑयल को कंट्रोल करता है। सो ग्रुप ऑफ पीपल दे टोटली कंट्रोल एवरीथिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट। मोनोपोली क्या होता है? मोनोपोली इज अ मार्केट इन विच वन सिंगल लार्ज फर्म विल कंट्रोल द एंटायर मार्केट फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट के लिए, कोई भी सर्विस के लिए। अब ध्यान से, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नाउ इफ यू सी, in both the situations consumer is the loser, correct or wrong? Obviously यहाँ पे हर obviously they control everything, so they can do anything, it can go against the consumer, so consumer loser होता है। मोनोपोली में भी वही है। now you want to enter a market but it is someone, Mr. X is having monopoly, so consumer is getting one product only, consumer is not like they do not have options. So in both the situations, consumer is the loser. All are correct. Okay. So this is how when you study, you have to study in a very detailed manner. See, detailing does not mean everything. At least which is relevant. Now the thing is, a fresher cannot know what is relevant, or what is irrelevant. उनको पता नहीं चलेगा, उनको जो बोला जाएगा इंस्टीट्यूट में वो वही करेंगे। So here a teacher or a mentor should play his honest part. खास करके मेंटर आपको बताएगा कि क्या क्या, अगर मेंटर शुड बी रियल ऑल्सो। आजकल बहुत मेंटर्स आ चुके हैं, 24 साल 25 साल में भी मेंटर बन जाते हैं, राइट? सो द थिंग इज यू हैव टू नो एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या आता है, यू हैव टू अडेप्ट टू यूपीएससी लेवल। यूपीएससी विल नेवर अडेप्ट अस। ओके, फाइन। नेक्स्ट, सो कार्टेल एंड मोनोपोली में डिफरेंस वही है। इन ईदर सिचुएशन द कंज्यूमर इज द लूजर। ओके, because they control the market. Suppose a product है, they control the market, they can give you inferior goods also, you can't do anything because they are controlling. और मोनोपोली अगर है, कोई नहीं है, वो अकेला ही है, तो वो भी inferior goods दे सकता है आपको, inferior goods और सर्विसेज दे सकता है, तो कंज्यूमर ही लॉस हुआ ना उसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉलिटी करंट अफेयर्स, नॉट स्टैटिक। पॉलिटी करंट अफेयर्स, एंटीसिपेटरी बेल के बारे में। An accused denied anticipatory bail can be given protection. क्या ये सही है? एक accused डिनाइड, उसको डिनाई दिया, मतलब एंटीसिपेटरी बेल मिला नहीं उसको। एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है? एनीवन हु एंटीसिपेट्स एन अरेस्ट, तो वो बेल पहले से ले सकता है कोर्ट से। सो एन accused denied anticipatory bail can be given protection. Is it right or wrong? Okay. This provision means anticipatory bail provision allows a person to seek bail in anticipation of an arrest on accusation of having committed a non-bailable offence. This is the meaning of anticipatory bail. अगर उसने कोई non-bailable offence किया है and he is anticipating कि tomorrow, day after tomorrow, in some days I'll get arrested, he can take a bail. Here both statements are correct. Both statements are correct. This was his news recently given by Supreme Court. कि accused denied anticipatory can be given protection. उसको protection दिया जा सकता है। अब क्या प्रोटेक्शन दिया जाएगा? विल कम टू दैट। यस, इज दिस द अग्रिम जमानत, व्हिच यू कॉल्ड इन हिंदी? जमानत हिंदी में अग्रिम जमानत, आई गेस। हम तो एंटीसिपेटरी बेल ही बोलते हैं। नो, बिकॉज़ वी ऑल मीनिंग क्या दोनों का सेम है। हो सकता है। हिंदी में क्या बोलते हैं? किसी ने कुछ कर लिया हो ऐसा, हाँ, क्राइम कर लिया हो, उससे पहले वो बेल ले लेता है। बेल ले लेता, बट इसको नॉन बेलेबल, क्राइम मतलब नॉन बेलेबल अगर होगा। ओके, तो सेक्शन फंसा हो। हाँ, समझ गया। चलो हिंदी की जरूरत नहीं, हिंदी में क्या है? सेक्शन 438। तुम हिंदी में दे रहे हो या इंग्लिश में दोगे एग्जाम? ओके, सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है। इट अलाउज अ पर्सन टू सीक बेल इन एंटिसिपेशन ऑफ एन अरेस्ट ऑन एक्यूजेशन ऑफ हैविंग कमिटेड अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। ग्राउंड क्या है? ये ग्राउंड है, नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द एक्यूजेशन,
previous cases on applicant. Court can be imposing certain terms and conditions. कोर्ट के पास पावर होता है, रेस्ट्रिक्शन दे सकता है ऑन ट्रैवलिंग अब्रॉड, बाहर नहीं जा सकते. इट डिनाइड a person can be arrested without a warrant. तो अब मुझे बताओ ये सब ग्राउंड से, जरूरी ये नहीं है, जरूरी ये क्या है यहाँ पे कि अभी हम इसको कैंसिल कर सकते हैं या नहीं. यस, कौन कर सकता है? कोर्ट कर सकता है. कोर्ट एंटाइटल्ड टू कैंसिल और रिकॉल द एंटिसिपेटरी बेल. पुलिस भी जा सकता है, कैन गो टू कोर्ट फॉर कैंसिलेशन ऑफ एंटिसिपेटरी बेल. पुलिस जाएगा कोर्ट में, लेकिन फाइनली कोर्ट भी तो देगा ना. तो कैंसिलेशन ऑफ एंटिसिपेटरी बेल इज ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी, इज ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी. ओके फाइन. अब कुछ रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स देखते हैं. देखो, आई टेल यू टुडे कि एंटिसिपेटरी बेल का बहुत सारे जजमेंट है, बहुत पुराने पुराने जजमेंट्स है, बट वी विल ओनली राइट दोज जजमेंट्स फॉर मेंस पर्सपेक्टिव या फिर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव व्हिच आर वेरी रिसेंट और करंट अफेयर में है. अभी 2020 में केस हुआ था सुशील अग्रवाल केस. ठीक है, इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट्स लाइन ऑफ जजमेंट स्टेटिंग एंटिसिपेटरी बेल नॉट फॉर लिमिटेड टाइम. कोई एक लिमिटेड टाइम के लिए नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली बोला. पिछले कुछ केसेस है जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इट इज फॉर लिमिटेड टाइम, बट रिसेंटली एज पर द लेटेस्ट जजमेंट is not for limited time. There is nothing in CRPC that indicates the grant of anticipation should be time bound. ये सुप्रीम कोर्ट बोला है कि सीआरपीसी में ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि this one should be time bound. कुछ ऐसा लिखा नहीं है. However, under CRPC, it is the discretionary power of the court to decide case to case. Every case is different, right? तो केस टू केस के हिसाब से कोर्ट डिसाइड करेगा depending on the stage at which the bail application has moved or prevalence of any pending circumstances necessitating to limit the tenure. कोर्ट कर सकता है, लिमिटेड टाइम के लिए तो नहीं है, लेकिन कोर्ट को अगर लगेगा कोर्ट कर सकता है. इम्पोज ए टाइम लिमिट, तो कोर्ट कैन इम्पोज, कोर्ट के पास पावर है टू इम्पोज टाइम लिमिट. ओके, and can continue till the end of the trial. If any court wants to limit the bail, it can attach special features or circumstances warranting the same. अगर ये टाइम लिमिट इम्पोज कर रहा है तो कुछ कंडीशंस, कुछ सर्कमस्टांसेस कोर्ट बता सकता है. ओके, the court while granting anticipatory bail should examine the seriousness and gravity of the offense, like the nature of the crime क्या है, मटेरियल प्लेस्ड ऑन द रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इट्स नॉट लाइक कि आपने एंटिसिपेटरी बेल डाल दिया और आपको मिल जाएगा, वैसा नहीं है. इट डिपेंड्स ऑन द कोर्ट. द कोर्ट विल डिसाइड फाइनली टू इम्पोज एनी कंडीशन ऑन द पिटिशनर इफ नेसेसरी. द कोर्ट कैन रीच द पुलिस कैन रीच द कोर्ट सीकिंग परमिशन फॉर अरेस्ट इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ सच इम्पोज्ड कंडीशंस. और एक केस भी हुआ है पृथ्वीराज चौहान जैसे भी है 2020 में. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट प्रोविजंस ऑफ एंटिसिपेटरी बेल shall not apply to scheduled caste and scheduled tribes. एक एक्ट है, वेरी फेमस एक्ट, SC and ST Atrocities Act of 2018, लेकिन यहां पे अप्लाई नहीं होगा. सो दिस इज अ प्रीलिम स्टेटमेंट, यहां पे अप्लाई नहीं होगा. दिस एक्ट इज वेरी पावरफुल. अब जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि द अक्यूज्ड डिनाइड एंटिसिपेटरी बेल कैन बी गिवन प्रोटेक्शन, ये सुप्रीम कोर्ट का है. डेट देखो 2021 का न्यूज है, मई लास्ट ईयर का न्यूज. कोर्ट बोला कि लॉ डज नॉट अकाउंट फॉर ऑल कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ. सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सेड एन अक्यूज्ड डिनाइड, किसी को अगर एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिला है, एन अक्यूज्ड डिनाइड कैन in exceptional cases still be given protection from immediate arrest if his sudden incarceration by the state will plunge his personal affairs and family into crisis. मतलब उसको एक फंडामेंटल राइट मिल रहा है, उसको अगर कोई भी सडन, स्टेट मतलब यहाँ पे सरकार, ओके, स्टेट मीन सरकार और पुलिस, अगर वो उसके पर्सनल अफेयर्स में या फैमिली को क्राइसिस में डाल रहा है, यू विल गेट अ प्रोटेक्शन. ओके, नाउ
इफ आई आस्क आर्टिकल 21 का प्रोटेक्शन, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, डिग्निटी जो भी है, प्लस एंटिसिपेटरी बेल, now the task I am giving is check whether article 21 comes under anticipatory bail or anticipatory bail comes under article 21, protection मिलेगा या नहीं. ठीक है, there is no direct thing, you have to check and let me know. ठीक है, just note it down कि I'll go through anticipatory bail and article 21. Okay, there are number of cases where you'll have a very much good clarity. Okay, fine. Next, recently news, the seed scheme is related to which of the following? To empower India's youth with employable skills, agricultural marketing infrastructure, economic empowerment of denotified tribes. Now seed scheme is in news recent. सीड देख के एग्रीकल्चर भी एक पॉइंट है, इंडिया यूथ, ये भी काफी अच्छा लग रहा है स्टेटमेंट देख के. ये सब गलत है. ये डी नोटिफाइड ट्राइब्स को एम्पावर करने के लिए है इकोनॉमिकली, सीड स्कीम. ओके, सीड स्कीम का है. So seed scheme is under Ministry of Social Justice and Empowerment. Very recent scheme. यहाँ पे क्या होगा? Good quality coaching, health insurance, livelihood initiative at community level, financial assistance for construction of houses, सब दिया जाएगा. Denotified, nomadic and semi-nomadic tribes, ये एक बहुत ही important topic है. वो आ जाएगा गवर्नेंस में. टॉपिक इज गवर्नेंस टॉपिक. यू हैव टू कवर लाइक दिस गवर्नेंस टॉपिक. कोई भी स्कीम आ गया, कोई भी एजेंसी आ गई, एनआईए आ गया, तो न्यूज में यू हैव टू कवर गवर्नेंस दैट वे. ओके, सो ये क्या है? ये एक ऑनलाइन पोर्टल भी किया है इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए. हु आर दिस? दीज आर कम्युनिटीज दैट आर द मोस्ट वल्नरेबल एंड डिप्राइव्ड. ब्रिटिश के टाइम से ही इनको एक क्रिमिनल घोषित किया गया था. सो दीज आर communities that were notified as being born criminals during the British regime under a series of laws starting with the Criminal Tribes Act of 1871 के इनको क्रिमिनल स्टेटस दिया था उस टाइम से. These acts were repealed. फिर इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ उनको रिपील किया गया है. दिस पुराने एक्ट्स को they repealed and these communities were denotified because they were notified as born criminals. A few of these communities which are listed as denotified were also nomadic. घूमते रहते थे. Nomadic means घूमना, एक जगह से दूसरी जगह. ओके, कार्तिक स्पीक करो यहाँ पे, चैट में मत लिखो. टेल मी. Sir, anticipatory will comes under article 21. But not always. The answer is not always. Not always. The court will see. The court, it's up to the courts because there are very varied judgments. I know you have checked the internet. I have already checked it. If you go deep, you will come to know. Just type. Okay. Just type anticipatory bail article 21 space I pleaders. You will come to know. It's not always. Okay, it's not always. Still, there is ambiguity in court judgments. You will come to know. Okay, fine. Nomadic and semi-nomadic communities are defined as those who live from one place to another, rather living in एक place पे नहीं रहते हैं, घूमते रहते हैं. Historically, nomadic tribes and nomadic tribes never had access to private land, home ownership. उनको पहले टाइम से उनको नहीं दिया जाता था कुछ. Home ownership नहीं है, private access नहीं है. Okay. While most DNTs are spread across ST, SC and OBC categories, some DNTs are not covered. ये है एक issue. अगर मेंस का क्वेश्चन है, एक issue है. They are not covered under any category. Okay. Many committees constituted since independence have referred to the problems of these communities. बहुत सारे communities, commissions पहले से after independence उनको इसके problems को they have talked about it, but कुछ खास हुआ नहीं है.
These include the Criminal Tribes Inquiry Committee हुआ था 1947 में, constituted in UP. No need to remember. कुछ कमेटी का नाम पुराने कमेटी, Anantasanam Iyengar Committee, no need to remember. It was based on the report of this committee. The Criminal Tribes Act was repealed. इसी कमेटी ने फाइनली 1949 में बोला कि रिपील करो. देन वो जो पुराना एक्ट था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, जहां पे उनको नोटिफाई किया गया था कि दे आर बॉर्न क्रिमिनल्स, इट वाज रिपील्ड. काका केलकर कमीशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉलिटी बुक में भी है लक्ष्मीकांत में. इट इज द फर्स्ट ओबीसी कमीशन. ये भी कुछ बोला था. बीपी मंडल कमीशन, वेरी इंपॉर्टेंट, सब आगे पढ़ेंगे, ये भी पॉलिटी में है. Constitution 1980 also made some recommendation on the issue. Finally, एक national commission to review the working of constitution हुआ था. It held that DNTs have been wrongly stigmatized as crime prone and subjected to high-handed treatment as well as exploitation by the representatives of law and order and general society. ठीक है, तो बहुत सारे कमीशंस पहले से आए हैं. And this national commission was under the Justice Venkatachalya. 2002 पे हुआ था. ओके, सो और एक चीज ये भी कुछ साल पहले हुआ था, सम इयर्स बैक, डेवलपमेंट ऑफ वेलफेयर बोर्ड फॉर डीनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज. कब हुआ था? 2014 में एक बोर्ड हुआ. ठीक है, इनके लिए क्या करने के लिए? टू प्रिपेयर स्टेट वाइज लिस्ट विच सबमिटेड इस रिपोर्ट इन 2018 एंड आइडेंटिफाई किया कि 1262 कम्युनिटीज एज डीएनटीज. तो कमीशन ने रिकमेंड किया कि सेटिंग अप ऑफ ए परमानेंट कमीशन एक करो फॉर दिस कम्युनिटीज के लिए, एक परमानेंट कमीशन बनाया जाए. फिर गवर्नमेंट ने सेटअप किया डेवलपमेंटल वेलफेयर बोर्ड, एस्टेब्लिश्ड. नाउ ये जो बोर्ड है, इट इज काइंड ऑफ ए सोसाइटी टाइप का काम कर रहा है. रजिस्टर्ड एज ए सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1960 में रजिस्टर्ड है. इस एक्ट के अंदर में अंडर देयर इज अ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट for the purpose of implementing welfare programs. And this development welfare board was constituted under the chairmanship of Bikuji Ramji Edet. और यही है ईडेट कमीशन, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि करंट अफेयर में पढ़े भी हो. ईडेट कमीशन रिकमेंडेड अबाउट डीएनटीज. ठीक है, ओके, नेक्स्ट. ओके, नाउ कम्स इकोनॉमिक क्वेश्चन. इकोनॉमिक क्वेश्चन ऐसा ही आते हैं, रेशियो क्वेश्चन आते हैं, बैंकिंग क्वेश्चन आते हैं, डेप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन, रेपो रेट. मोस्टली 5 to 6 चैप्टर्स का क्वेश्चन है. बाकी सब नॉर्मल फैक्ट होता है, वहां से ज्यादा पूछता नहीं है. दे विल आस्क स्टेट एग्जाम्स में, दे मे आस्क, बट यूपीएससी में दे विल आस्क कॉन्सेप्ट लेवल क्वेश्चंस, हाउ यू हैव अंडरस्टूड इकोनॉमिक्स. ओके, सो कमिंग टू द क्वेश्चन. Leverage ratio. Consider the following with reference to leverage ratio of banks. The Basel Committee on Banking and Supervision introduced leverage ratio in Basel 2 package of reforms. ये 2 है. Okay, Basel 2. Now, is it correct or wrong? Leverage ratio came in Basel 3, not in 2. Second statement, it measures a bank's core capital to its risk-weighted assets. It measures the bank's core capital to its risk-weighted, not all. Those assets which are risky, risk-weighted assets. Third, a limitation of using the leverage ratio is that investors are reliant on banks to properly calculate and report their tier 1 capital and total assets figures. See, first statement is wrong because it is Basel 3. Second statement is also wrong. Why? Because it is what? Anyone? Second statement is the statement of capital adequacy ratio, not leverage ratio. Second statement, bank's core capital to risk weighted assets, its capital adequacy ratio concept. Third statement is correct.
Because leverage ratio, the limitation क्या है कि investors are reliant on banks to properly calculate and report their this capital and total assets figure. अभी leverage ratio है क्या? If you know 1 and 2 is wrong, done. Question is done. If you know it, simple, the meaning. Now, what is leverage ratio? Leverage ratio in Basel 3 package of reform. It came in Basel 3. Okay. अब leverage ratio RBI ने recently mandate किया है 3.5%. 3.5% for all banks except for the domestic systematically important banks like SBI, HDFC. Domestic systemically important banks are those banks which are too big to fail. So today's your topic is this DSIBS. Cover from internet. Very self-explanatory. If any problem, ask me. Okay. What is the purpose of leverage ratio? The leverage ratio measures क्या measure करते हैं बैंक का core capital to its total assets. यहाँ पे अगर मैं risk weighted asset लिखता हूं तो ये बन जाएगा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो. सिंपल. ठीक है. अब टायर 1 कैपिटल है क्या? These are the ones that can be easily liquidated. टायर 1 कैपिटल. ठीक है. That can be easily liquidate हो सकता है. कन्वर्ट हो सकता है लिक्विड कैश में. If a bank needs capital in the event of a financial crisis. So it is basically a ratio to measure a bank's financial health. ठीक है. टोटल एसेट से कितना बैंक्स का टायर 1 कैपिटल है. ठीक है. जब भी कोई कैपिटल फाइनेंशियल क्राइसिस होता है तो कितना पैसा वो मतलब कंपेंसेट कर सकता है या फिर एक फाइनेंशियल क्राइसिस में ऑब्वियसली फाइनेंशियल क्राइसिस में पैसा चाहिए. So that is the leverage ratio. So the higher the tier 1 leverage ratio, the higher the likelihood of a bank withstanding negative shocks. Leverage ratio अगर ज्यादा है तो obviously negative shock को withstand करने के लिए भी ज्यादा क्षमता रहेगी. The higher the likelihood, the bank can withstand. Leverage ratio is used as a tool by central monetary authorities to ensure the capital adequacy of banks and place constraints on the degree to which financial company can leverage its capital base. ये यूज होता है कि कितना लेवरेज कर सकता है, कितना लेवरेज है. सो बेसल 3 ने इन बेसल 3 दिस रेशियो केम एंड दे टोल्ड कि 3% मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए फॉर द लेवरेज रेशियो व्हाइल इट इज लेफ्ट ओपन फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग द थ्रेशोल्ड इवन हायर फॉर सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. बेसल ने 3% बोला है, आरबीआई ने 3.5% रखा है बिकॉज बेसल रिकमेंडेशंस आर नॉट मैंडेटरी. बेसल रिकमेंडेशंस आर नॉट मैंडेटरी. फॉर्मूला क्या है? टायर 1 कैपिटल बाय टोटल कंसोलिडेटेड एसेट्स इनटू 100. ठीक है. तो बैंक का जो टायर 1 कैपिटल है which can be very easily liquidated. क्या है एग्जांपल? बैंक का कॉमन इक्विटी, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिजर्व्स एंड सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स विद डिस्क्रिशनरी डिविडेंड्स एंड नो मैच्योरिटी. अब लेवरेज रेशियो एंड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में क्या डिफरेंस मैंने बता दिया है. कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज द रेशियो ऑफ ए बैंक्स कोर टायर 1 कैपिटल, वही टायर 1 कैपिटल बट डिवाइडेड बाय द टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स. इनका रिस्क वेटेड एसेट्स किसका है? इट इज ए की मेजर ऑफ बैंक्स फाइनेंशियल दैट हैज बीन अडॉप्टेड एज अ पार्ट ऑफ बेसल 3 अकाउंट. ये भी बेसल 3 में आया है. लेवरेज रेशियो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो सब बेसल 3 में ही आया है. So it measures the bank's core equity capital as against its total risk weighted assets. Risk weighted assets से कितना उनका टायर 1 कैपिटल क्या है. ओके. नेक्स्ट, consider the following statements about provisioning coverage ratio PCR. प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो होता क्या है? ये क्या होता है? प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो इट इज अ परसेंटेज ऑफ फंड्स दैट बैंक असाइड रखता है, सेट्स असाइड फॉर लॉसेस ड्यू टू बैड डेब्ट्स.
काफी सारे लोन्स, काफी सारे बैड डेप्ट होता है बैंक का, ठीक है, एनपीएस। तो कितना जो लॉसेस को कवर करने के लिए बैंक कितना पैसा पहले से थोड़ा अलग से रखता है, दैट इज द प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो. सो लोअर प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो कैन मेक बैंक्स टू विथस्टैंड फ्यूचर लॉसेस बेटर. नो, इट इज हायर. प्रोविजनिंग कवरेज से ज्यादा अगर है तो फ्यूचर लॉसेस को बेटर विथस्टैंड कर सकता है ना. अगर कम है, अगर बैंक जो हाउ मच परसेंटेज, हाउ मच percent of funds you keep aside, if you keep it on a low, very less, obviously you can't, bad debt jab hoga you can't withstand, like, so it will be higher. Liquidity coverage ratio. Now the question is liquidity coverage ratio. Liquidity coverage ratio refers to, it is not provisioning coverage ratio and LCR. Question is about PCR and LCR. It refers to the high quality assets held by financial institutions to meet their short-term obligations. Short-term obligations, this is correct statement. शॉर्ट-टर्म ऑब्लिगेशन जो होता है उनका, उनके लिए कितना हाई क्वालिटी एसेट्स है, कितना वो होल्ड करते हैं या फिर हेल्ड करके रखे हैं, दैट इज अ लिक्विडिटी कवरेज रेशियो. So this we have covered. Provisioning ratio, higher provisioning ratio can make banks to withstand future losses better. Okay. Liquidity coverage ratio is the requirement whereby banks must hold an amount of high quality liquid assets that's enough to fund cash outflows for 30 days. It is a requirement. करना पड़ेगा, आपको रखना पड़ेगा, where बैंक होल्ड करते हैं an amount of high quality liquid assets जो कि कैश फ्लोज ऑफ 30 डेज के लिए वो विथस्टैंड कर सकता है. ये भी एलसीआर, व्हाई दीज आर इंपॉर्टेंट, बिकॉज दीज आर ऑल इंट्रोड्यूस्ड इन बेसल 3. ठीक है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, फिर लेवरेज रेशियो, एलसीआर, ये सब बेसल 3 में आया है. ओके, बेसल 3 कब आया था? 2008 जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है उसके बाद आया था, एंड वाज फाइनलाइज्ड बाय द बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, यही कमिटी है, एंड वाज फाइनलाइज्ड हुआ था 2013 पे. तो एलसीआर क्या है? हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल कैश नेट कैश फ्लो अमाउंट. सिंपल. तो बेसल नॉर्म्स के बारे में आई हैव पुट सम इंफॉर्मेशन. 1998 से आया था पहला वाला, 1998. इट फोकस्ड ऑलमोस्ट एंटायरली ऑन क्रेडिट रिस्क के ऊपर वो फोकस किया था. इट वाज वेरी इनिशियल टाइम. So credit risk क्या है? It is a possibility of a loss resulting from borrower's failure to repay a loan or meet contractual obligations. Traditionally, it refers to the risk that a lender may not receive the owed principal and interest. Credit risk. Credit दिया लेकिन वापस नहीं आएगा. It defined capital and structure of risk weights for banks. Minimum capital requirement was fixed at 8% of the risk weighted assets. जो भी asset है बैंक का, रिस्क उसका 8% आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट मिनिमम रखना है. ठीक है, सो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट वाज 8%. Obviously, it is up to the country. It is up to the banks or up to the RBI to decide. But बेसल ने ये बोला था कि 8% रखो. ओके, फाइन. इंडिया ने अडॉप्ट किया 1999 में, और कुछ ये पुराना हो गया है. अभी इंडिया बेसल 2 में है. So in 2004, Basel 2 guidelines were published again. They were refined, reformed versions of Basel 1. यहाँ पे they are based on 3 pillars: capital adequacy requirement, supervisory review, market discipline. बैंक्स ने बोला कि मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट 8% रखोगे ऑफ रिस्क एसेट्स. सुपरविजरी रिव्यू, बैंक्स को अच्छे से मैनेजमेंट टेक्निक करके मॉनिटर करना चाहिए कि कितना रिस्क है, क्या है, खास करके क्रेडिट में क्या हो रहा है, मार्केट में ऑपरेशनल रिस्क क्या है, सबको मॉनिटर करना पड़ेगा. फिर मार्केट डिसिप्लिन, दिस नीड्स इंक्रीज्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स. आप डिस्क्लोज अच्छे से करो. Banks need to mandatorily disclose their capital adequacy requirement. It's not capital adequacy ratio, it is simply capital adequacy requirement. अपना रिस्क एक्सपोजर क्या है सब आपको मैंडेटरीली डिस्क्लोज करना पड़ेगा आरबीआई को, अपने अपने बैंक्स को. ठीक है.
Basel II norms in India and overseas are yet to be fully implemented, though India follows these norms. India follow तो करता है लेकिन fully implement अभी तक नहीं हो पाया है. Now come to Basel III. Basel III guidelines in 2010 में हुआ, रिलीज हुआ. These guidelines obviously after 2018 8 में के बाद इंट्रोड्यूस हुआ था. ईयर नॉट रिक्वायर्ड. बस आपको ये जानना है कि 4 थिंग्स यहाँ पे फोकस करने के लिए बोला गया. द गाइडलाइंस 4 चीज: कैपिटल, लेवरेज, फंडिंग, लिक्विडिटी. तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो यहाँ पे आया. उन्होंने बोला कि 12.9% मेंटेन करो. ठीक है. बट आई गेस वी मेंटेन अराउंड 9% and 12% फॉर प्राइवेट बैंक्स एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स. So it is up to us to decide. They told कि 12.9% करो. और टायर 1 कैपिटल, मिनिमम टायर 2 कैपिटल 10.5%, 2%. These are all not required. Just you need to know कि ये 4 क्या है. Okay, these are not required. लेवरेज क्या है, एलसीआर, और ये सब चीज हम जब इकोनॉमी में पढ़ेंगे, दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई टेल यू. ओके. एलसीआर, नेट स्टेबल फंड्स रेट क्या है, ये सब हम कवर करेंगे व्हेन वी टीच इकोनॉमिक्स. नहीं तो यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वी कांट कवर. ओके. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. गो थ्रू इट. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. नाउ कमिंग टू इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और एक रेशियो है. Interest coverage ratio is a debt and profitability ratio used to determine how easily a firm can pay or cover the interest on its outstanding debt. आप जब यहाँ पे फर्म का बात है, कोई भी आ सकता है, कितना वो पे कर सकता है अपना इंटरेस्ट, अपना जो डेप्ट है उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना अच्छे से वो पे कर सकता है, यही रेशियो वो कैलकुलेट करता है. इफ ए कंपनी हैज लो इंटरेस्ट coverage ratio, there is a high chance that the company won't be able to service its debt. ठीक है. अगर ये रेशियो जितना अच्छा है, इट मींस वो अच्छे से रीपे कर पा रहा है. इंटरेस्ट कवरेज, वो इंटरेस्ट को, हाउ टू रिमेम्बर, इंटरेस्ट को कवर कर पा रहा है या नहीं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. अब ये लो है तो ऑब्वियस सी बात है, देयर इज ए हाई चांस दैट अ कंपनी अपना डेप्ट को नहीं दे पाएगा, वोंट बी एबल टू सर्विस इट्स डेप्ट. सीधी सी बात है. तो बोथ आर करेक्ट. मर्चेंट डिस्काउंटेड, एमडीआर, ये भी इकोनॉमी का पार्ट है, न्यूज में भी है. एमडीआर इज द सेम फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मर्चेंट्स. नो, स्मॉल मर्चेंट्स के लिए अलग है, बिग मर्चेंट्स के लिए अलग है. बट हाँ, वही 0.45 to लेके 1% के आसपास में रहता है, 0.8% रहता है. नो टू रिमेम्बर, बट जस्ट रिमेम्बर सेम नहीं है सबके लिए. ठीक है. रिटेल मर्चेंट्स, स्मॉल मर्चेंट्स अलग अलग होता है. तो वन स्टेटमेंट इज रॉन्ग. एमडीआर is a cost paid by a merchant to a bank for accepting payment for their customers via digital means. Yes, जो POS इंफ्रास्ट्रक्चर जो रहता है, हम जो जाके पॉइंट ऑफ सेल्स पे हम कुछ खरीदते हैं या फिर हम डिजिटली पे करते हैं, तो ये वही कॉस्ट है जो कि मर्चेंट बैंक को देता है फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट फॉर फ्रॉम देयर कस्टमर्स वाया डिजिटल मींस. करेक्ट. रिसेंटली गवर्नमेंट ने अमेंड किया है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट ऑफ 2007 टू वेव ऑफ एमडीआर. अभी रिसेंट न्यूज है, यूपीआई और रुपे कार्ड के ऊपर एमडीआर एबोलिश कर दिया है सरकार ने बाय अमेंडिंग दिस एक्ट. करेक्ट स्टेटमेंट. सो 213 आर रिसेंटली एमडीआर, अभी मर्चेंट डिस्काउंट रेट अभी 0 हो गया है. पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया बोल रहे हैं कि नहीं, उसको वापस लाओ, अभी 0 हो गया है. अब रीजन क्या है मैं बताऊंगा अभी. सो ये क्या, इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द चार्जेस एंड टैक्सेस दैट ए डिजिटल पेमेंट एंटेल्स. फॉर इंस्टेंस, एमडीआर इंक्लूड्स बैंक चार्जेस व्हिच ए बैंक चार्जेस ऑन द कस्टमर्स एंड मर्चेंट्स फॉर अलाउइंग पेमेंट्स टू बी मेड डिजिटली, क्योंकि बैंक चार्ज करता है. सिमिलरली एमडीआर आल्सो इंक्लूड द प्रोसेसिंग फीस चार्जेस दैट ए पेमेंट्स aggregator has to pay to online or mobile wallets or indeed to the banks for their service. Merchant must set up the service with the bank, agree to the rate prior to accepting the debit card, credit card as payments. Okay.
अब हुआ क्या है, फॉर स्मॉल बिजनेस 0.3% होता है, 200 रुपए, 200 रुपीज पर ट्रांजेक्शन, विच इज लोअर। लार्ज बिजनेस के लिए कुछ 0 पॉइंट समथिंग और होता है, तो अलग अलग है ना। अभी अगर एमडीआर 0 हो गया यूपीआई रुपए कार्ड के लिए, तो हु बियर कौन करेगा फिर, हु विल बियर? See, if customers don't pay and merchants don't pay, some entity has to pay for the MDR cost, right? The finance minister के speech में the finance minister said that RBI and banks will absorb this cost from the savings that will accrue to them on account of holding less cash as people move to these digital modes of payment. अब ये इसलिए हुआ है ताकि थोड़ा कैशलेस इकोनॉमी और बढ़े, ओके, सो नेसेसरी है। और ये बोल रहा है कि ये जो कॉस्ट है हम दे देंगे, बैंक और आरबीआई दे देंगे। नेसेसरी चेंजेस हुआ है एक्ट में ये लाने के लिए। एक हो गया पीएसएस एक्ट ऑफ 2007, वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, और इनकम टैक्स एक्ट में भी थोड़ा बहुत अमेंडमेंट्स हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, which of the following may lead to depreciation of the rupee? वेरी इंपॉर्टेंट, depreciation of rupee। depreciation मतलब क्या है? depreciation of rupee means the demand for dollars is increasing and demand for rupee is decreasing, ओके। तो इनमें से कौन सा may lead to depreciation of rupee? One is decrease in FDI, okay, second is increase in exports, थर्ड इज डिक्रीज इन रेमिटेंसेस। सेकंड क्या है? इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, डिक्रीज इन रेमिटेंसेस। सो डिक्रीज इन रेमिटेंस अगर होगा, रेमिटेंस मतलब तुम अगर बाहर कहीं काम कर रहे हो वेस्ट एशिया में, या फिर यूएस में काम कर रहे हो, यू आर गिविंग मनी टू योर कंट्री इंडिया, ठीक है, यहाँ पे भेज रहे हो, पैसा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। जब पैसा आ रहा है तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एनीवन, क्या होता है? जब पैसा आ रहा है यहाँ पे, ये डॉलर पे कमा रहा है, डॉलर्स एंट्री हो रहा है, यहाँ पे जब आएगा तो वो रुपी में आएगा ना, एक्सचेंज रेट हो गया, तो डिमांड किसका बढ़ रहा है? डिमांड रुपी का बढ़ रहा है। तो रेमिटेंसेस अगर बढ़ेगा तो डिमांड रुपी का बढ़ेगा, डिमांड रुपी का बढ़ेगा तो अप्रिसिएशन होगा। अभी मैंने बोला डिप्रिसिएशन मतलब डिमांड ऑफ रुपी कम हो रहा है, ठीक है। नाउ डिक्रीज इन रेमिटेंसेस, यस, अगर रेमिटेंसेस डिक्रीज हो जाएगा तो डिमांड ऑफ रुपी कम हो जाएगा, तो डिक्रीज इन रेमिटेंसेस इज करेक्ट, 3 इज करेक्ट, ओके। नाउ इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, बताओ, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स अगर होगा क्या डिप्रिसिएशन होगा शॉर्ट रन पे? टेल मी, एनीवन? देखो डिप्रिसिएशन होगा जब डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स होगा, डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स होगा एंड इंक्रीज इन इंपोर्ट्स होगा, इंक्रीज इन इंपोर्ट्स, बिकॉज व्हेन यू इंपोर्ट मींस वी बाय समथिंग, बाय करेंगे मतलब रुपी, हम डॉलर पे बाय करेंगे, राइट, हम डॉलर पे बाय करेंगे, राइट, यहां से हम बाय करेंगे, डॉलर पे बाय करें मतलब डिमांड ऑफ द डॉलर इंक्रीजिंग, डिमांड ऑफ द डॉलर इंक्रीजिंग, ठीक है। सो द आंसर इज 1 एंड 3, not 2, it is decrease in exports. One option was decrease in FDI. Now FDI अगर डिक्रीज होगा, सेम चीज, कॉन्सेप्ट इज द सेम। एफडीआई का है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर से पैसा आएगा, ठीक है। इधर अगर कोई एक कंपनी है बाहर यूएस में, इधर इंडिया में पैसा अगर इधर आता है तो दैट इज कॉल्ड एफडीआई, टू इन्वेस्ट 10% से ज्यादा, 10% से कम इट इज एफ आई आई, ओके। दोस कॉन्सेप्ट हम तो पढ़ेंगे बाद में। नाउ एफडीआई अगर डिक्रीज हो रहा है, एफडीआई अगर बढ़ रहा है तो पैसा आ रहा है, सेम चीज, रेमिटेंस कॉन्सेप्ट, डॉलर आएगा बट यहां पे आ रहा है, रुपी का डिमांड बढ़ रहा है, ये अगर कम हो जाएगा तो डिप्रिसिएशन होगा, रुपये का डिमांड घट रहा है,
So decrease in FDI will lead to depreciation. ठीक है, 1 and 3 are correct. यहाँ पे ये टेबल पे सब कुछ है. ओके, डेप्रिसिएशन उसका उल्टा होगा अप्रिसिएशन. नेक्स्ट. ओके, कंसिडर फॉलोइंग. तो करंट अफेयर्स हो गया. नाउ विल कम टू द स्टैटिक पार्ट. स्टैटिक में हमारा क्या था टॉपिक? वेरिकेज था, तो जल्दी जल्दी करेंगे बिकॉज इट इज वेरी स्टैटिक पार्ट, फटाफट हो जाएगा. Consider the following statements with reference to early Vedic age. There is no clear evidence of foreign trade and sea trade. Correct? Yes. वैदिक एज में फॉरेन ट्रेड सी ट्रेड का ज्यादा क्लियर एविडेंस नहीं है, लेकिन बिफोर वैदिक एज आईवीसी वाज देयर. इसमें फॉरेन ट्रेड सी ट्रेड पूरा क्लियर कट एविडेंस है. मेसोपोटामिया के साथ हमने पढ़ा था. ओके, correct. The word samudra used in Rig Veda is generally believed to denote a collection of water. Absolutely correct. So both are statements very self-explanatory in nature. Next, consider the following statements with reference to early Vedic period. Okay, early Vedic worshipped gods for spiritual upliftment. The Rig Vedic Aryans or early Vedic period. Okay, Rig Veda mentions about temples and idol worship. Absolutely wrong statement. Temple idol worship, bilkul. Idol worship came in later. Rig Veda, the Vedic religion was sacrificial in this. Absolutely correct. And over the Rig Veda Aryans worshipped for spiritual upliftment. Right or wrong? Yes, they uplift for spiritual. They did it for material gains, not for spiritual. They did for material gains. Rig Veda does not mention about temples. Deities were worshipped through recitation of prayers and sacrifices. Thus, Vedic religion was sacrificial in nature. Okay. Next, consider the following about Vedic era. In the early Vedic phase, there was increase in frequency of yajnas. See, later Vedic में yajnas का जो frequency है वो increase हुआ. Later Vedic में. This is wrong. Later Vedic phase involved killing of animals on a large scale because sacrifice increased. Sacrifices increased, so killing of animals बढ़ेगा. Later Vedic phase was focused on the centrality of the cult of sacrifice. Same thing. Sacrifice increased, so that their main focus was on the sacrifice का जो प्रथा होता है. Cult means प्रथा. Okay. 2 and 3 are correct. Next, same चीज लिखा है. The Dharma and Rita depict a central idea of the ancient Vedic civilization. In this context, consider the following statements. Dharma was a conception of obligations and the discharge of one's duty to oneself and to others. Absolutely correct. Dharma वही होता है duty. Dharma means duty, not religion. Rita has a fundamental moral law governing the functioning of the universe and all it often is. Rit, ये सब बुक में डायरेक्ट है. Direct statements, easy questions. Next. Okay, consider the following statements. Unlike the Harappan times, the Rigvedic goddesses were not attributed much power and they merely remained figures in wings. Absolutely correct. Harappa में mother goddess, ठीक है, पशुपति, all were there, very eminent position पे थे. Rigveda goddesses were not attributed much power and they remained बस एक मतलब they were there but उसको उतना वो पावर नहीं मिला. Henotheism or Cathanotheism was a major phenomenon in Rigvedic civilization. Yes, absolutely correct. क्या होता है? Henotheism is a phenomena where there is no fixed order of God. Whichever deity is invoked in a particular hymn, that becomes the supreme God. Hymn पे जिसका नाम पहले आएगा, जब भी आता है, that becomes the supreme God. So that concept was called Henotheism. So Henotheism concept was a very important part of Rigvedic society. So अगर कोई religion का question आएगा, you can write all these points in mains. Okay. Next. Right to work is a fundamental right under which of the following articles? So this is a fundamental right question. This week fundamental rights topic में था.
सो राइट टू वर्क जो है इट इज अंडर आर्टिकल 21 और 15 और 23 नॉट फंडामेंटल। ये सुप्रीम कोर्ट ने ओल्गा टेलिस केस में बोला कि इट इज इनहेरेंट इन आर्टिकल 21। ओल्गा टेलिस केस, नो नीड टू रिमेंबर, सुप्रीम कोर्ट has given lot of interpretations of article 20. It has become very broad. It is one of the shortest article. If you see, only 21 and 21A right to education, two clauses, one and one clause was added. But Supreme Court has brought a lot of things: right to privacy, right to passive witness here, right to environment. Lot of rights are there under Article 21. Next, the rights of economically weaker sections are not safeguarded by which of the following constitutional rights? Okay. Article 15, 16, 46, none are not. EWS का जो rights are not safeguarded by which constitution? 15 में है, 16 में है. Now what the problem is? What about 46 and none? Okay, answer is none. देखो 15 में हमने पढ़ा है रिजर्वेशन 10% in admissions to educational institutions. 16 clause 6 में रिजर्वेशन 10% in public appointments, वहां पे भी है. देखो 15 है एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, 16 है 16 is reservation of 10% in public appointments. 46 special care educational and economic interest of weaker section, यहाँ पे भी है. See the thing is 16 वो आप गेस कर सकते हो. What about 46? वहां पे भी है. So detail इसकी DPSP topic. This week I'm given DPSP topic, right? So DPSP word by word पढ़ना बहुत जरूरी है. Within the lines पढ़ना बहुत जरूरी है लक्ष्मीकांत बुक से. Okay, consider the following statements with reference to Article 15 and Article 16. In accordance with Article 15, the state can make, the state can make any special provision for women and children, and this will not amount to discrimination. Now you need to know each and every clause of Article 15 from Bare Act. Okay. Second statement, though reservation in favor of backward classes is permissible, yes, reservation hai Article 16, but no such reservation is possible in favor of women. Absolutely correct. If you see Article 16 all clauses, there is no reservation for women. Reservation in favor of backward classes is there. Okay, that will depending on the state. State will decide. 15 में state can make any special provision for women and children, but 15 में women and children के लिए state can. Discrimination में, reservation में नहीं है women के लिए. So you have to be very clear 15 and 16. Okay, fine. Statement 1 is Article 15 clause 3. Statement 1, statement 2 is नो रिजर्वेशन. वुमेन के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है. अब देखो स्टेट्स आर नॉट डिस्क्रिमिनेट, ये हो गया. नो सिटीजन ऑन दीज ग्राउंड्स कैन बी स्टॉप्ड विद एक्सेस टू शॉप पब्लिक, जो डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15. यहाँ पे देखो नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर मेन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन. तो स्पेशल प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है आर्टिकल 15. रिजर्वेशन इज आर्टिकल 16. ओके, स्पेशल प्रोविजन स्टेट कर सकता है फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजंस और फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और फॉर दीज आर ऑल स्पेशल प्रोविजंस. दीज आर ऑल एक्सेप्शंस टू डिस्क्रिमिनेशन. आप बोल रहे हो स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता ऑन these conditions, but yes they can make discrimination, like these are all positive discrimination. These are all positive discrimination. Okay. आर्टिकल 16 सेम चीज. यहाँ पे आप देखो रिजर्वेशन कहीं पे भी वुमेन के लिए रिजर्वेशन नहीं है, कहीं पे नहीं है. यहाँ पे इन पब्लिक मैटर्स इक्वलिटी, इक्वलिटी होगा. दे आर सेइंग इन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट. ओके, बट इफ यू सी केयरफुली, नो सिटीजन अगेंस्ट कहीं पे भी नहीं है वुमेन के लिए. इफ यू सी टू क्लॉज 4, nothing shall prevent the state from making any provision for the reservation of appointments or posts in favor of any backward classes of citizens, which in the opinion of the state का opinion होना जरूरी है. State if thinks कि they are not adequately represented in the service, then only reservation. So reservation is not, you can't claim it as a fundamental right.
You can't claim it as your fundamental right. No, you state things. Okay, fine. Okay, so we'll stop here till 20. We'll start, like we'll cover the next 25 questions tomorrow. Okay, you keep continuing your schedules and targets, and this week we'll cover the pending our mains question. Every day we'll cover uh, mains question and prelims last week discussion. Okay, so thank you.